Hello friends, welcome to my channel. In this video, we'll learn about the midpoint theorem. So what is midpoint theorem? This we are going to learn in this video, okay? So the first of all, we will learn the statements of the midpoint theorem, that what the meaning of the statement is of the midpoint theorem. So the midpoint theorem says that midpoint theorem means the line segment joining the midpoint of, okay, we are learning the midpoint theorem, the line segment joining the midpoint of any two sides any two sides of a triangle is parallel to the third side and one half of it. Okay, so this is the statement of the midpoint theorem. It is saying that the line segment, here it is a line segment, the line segment joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side and also one half of it. So let us understand the meaning of this statement. So let us draw a triangle. Okay, so in order to understand the statement of this midpoint theorem, let's take an example of a triangle. Suppose this is a triangle ABC. Okay, what is saying? The line segment joining the midpoint of any two sides of a triangle. Suppose this is the AB is also side, this AB is a side, AC is side, BC this, there are three sides, AB, AC and BC. These are the three sides. The statement is saying line segment joining the midpoint of any two sides. Suppose I am taking this side AB and AC. The midpoint of AB, suppose I am taking it D, and a midpoint of AC, suppose I am taking it E. So if we are drawing this line segment, okay, the line segment joining the midpoint of any two sides, suppose I am taking this AB and AC, the midpoints of AB is D and a midpoint of AC is E. So these 2 points से if we are drawing a line segment, अगर एक हम line segment draw कर रहे हैं तो ये जो line segment है मतलब क्या है, पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये जो थर्ड साइड बचा, जो रिमेनिंग साइड है ये BC, इसके पैरेलल है, प्लस और क्या है, हाफ ऑफ द थर्ड साइड, मीन्स जो DE है लाइन सेगमेंट है ये पैरेलल टू द थर्ड साइड, दैट इज BC के पैरेलल है, और जो DE हमारा क्या है, हाफ ऑफ द थर्ड साइड, मीन्स DE इज इक्वल टू 1/2 ऑफ BC. Once again, I am just reminding it. The line segment joining the midpoint of any two sides of a triangle. कोई भी एक ट्रायंगल ले सकते हैं. सपोज हमने ABC एक ट्रायंगल लिया और कोई भी दो साइड ले सकते. सपोज हमने AB एक ट्रायंगल लिया और AB एक साइड हमने लिया और एक AC साइड. ठीक, सपोज AB का साइड हमने, AB का मिड पॉइंट हमने D कंसिडर कर लिया और AC का मिड पॉइंट हमने E कंसिडर कर लिया. और इस मिड पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं, जो ज्वाइन कर रहे हैं इन दोनों मिड पॉइंट को, ये क्या होगा, मतलब अदर साइड के जो थर्ड साइड है इसके ये पैरेलल है लाइन, और क्या होता है 1/2 ऑफ द थर्ड साइड, उसके आधा होता है. सो यही मिड पॉइंट थ्योरम है. क्या, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, कोई भी दो साइड्स ट्राइंगल की, उसके क्या होगा, वो पैरेलल होगा थर्ड साइड के एंड हाफ ऑफ इट. ओके, so here this is DE is parallel to BC and DE is equal to 1/2 of BC. Okay, we can take another example. We can take any two sides. Okay, so suppose let's take one more example to understand it very clearly. एक और example लेते हैं अभी हम. So our triangle is PQR. Okay, again we may take, suppose this time I am considering this point as the this is PQR. Suppose I am considering X, द मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड QR इज X कंसिडर कर रहे हैं, और सपोज मान लें कि PR जो है, मतलब जो साइड PR इसकी मिड पॉइंट को मान ले रहे हैं Y. ओके, अब इन दोनों से मतलब एक लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन कर रहा है मिड पॉइंट ऑफ इस साइड के मिड पॉइंट और इस साइड, इन दोनों के मिड पॉइंट को ये लाइन जो ड्रॉ ज्वाइन कर रहा है ये लाइन सेगमेंट, तो ये लाइन सेगमेंट क्या होगा, थर्ड साइड के इस साइड के क्या होगा, ये पैरेलल होगा प्लस हाफ ऑफ इट, मतलब जो XY है ये पैरेलल टू द थर्ड साइड, जो थर्ड साइड जो बच गया PQ के पैरेलल है, और जो XY क्या होगा 1/2 ऑफ द PQ. ओके, so I hope that now you might have understood the midpoint theorem. Okay, be clear with the statement of the midpoint theorem and
it would be better that if you learn the statements, the line of these statements, that is the line segment joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side and one half of it. Okay, so again I am just repeating it. XY is parallel to PQ and XY is 1 by 2 of the PQ. So I hope that you might have understood it. This is all about the midpoint theorem, and this is a very important concept of geometry, and it is used a lot in higher classes also. So it's better to learn the statements, as well as not only learn the statements, you must know the each and every meaning of the whole statement. You must be knowing the proper meaning of each and every line, that what this statement is saying. I have already explained you with the two different examples. अगर हम कोई भी मतलब दो साइड से हम लोग मिड पॉइंट से मतलब अगर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये जो लाइन सेगमेंट होगा थर्ड साइड के पैरेलल होगा और थर्ड साइड के हाफ होगा. Okay, so I hope that you might have understood it. Thanks for watching it. If you find it useful, then do subscribe to our channel and like it and share it. Thanks and have a nice day.